Come into the glory of Christ. तुम प्रभु की महिमा में आओ। Be prepared to receive Jesus in your life. अब तैयार हो जाइए कि आप यीशु मसीह को Be prepared to face the judge, हमको न्याय को righteous judge. जो धार्मिक जज है He's going to judge us वो हमको न्याय लेकर the आएंगे। time that He has given to us. जो समय उन्होंने दिया हमको, You can be involved in the ministry of God. हम प्रभु की सेविकाएं हैं, हम मिल Don't सकते हैं। wait and when you go to the deathbed and say, regret about it, I should have done some ministry for God. हम मरने के बेड तक के लिए न रुके। Pastor Chris, 71 years of age, पास्टर क्रिस जो है वो 71 इयर्स के हैं। left his family, उन्होंने अपने परिवार को छोड़ son दिया। and daughter, grandsons, बेटा बेटी और जो भी उनके पोता पोती है, granddaughters getting married, जो पोती है उनके वो शादी कर रहे हैं। left everybody there. उन्होंने सबको छोड़ दिया Came to Kolkata. और वो कोलकाता आए And he left the comfort of being in US. और जो भी आरामदायक जीवन था Indians are fighting to go to US. बहुत लोग यूएस जाने के They लिए are striving hard to go to US. वो लोग बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे। US is my country, India is not my country. कि यूएस मेरा देश है। They seem to be so patriotic, but they live in US. पर वो लोग इतने पेट्रियोटिक होते हैं पर वो यूएस में रहते हैं। But they are so patriotic in God. पर वो प्रभु में बहुत Leaving the government, coming to a nation like India, उनका आराम जो जगह है वो छोड़कर वो इंडिया में आ and गए going through all the struggles, और सब जो वो संघर्ष the है वो देखते हैं traffics, the pollution, और जो पोल्यूशन को है at their elderly age, और ये जो बुजुर्ग missing their family, और वो जो उनके परिवार को missing every comfort, वो सबको मिस करते to हैं come to our land to preach the gospel. पर वो हमारे देश हमारी जगह आकर Just look at your own life. आपके जीवन को आप Why देखिए can't we just miss some comfort and come to the house of God and involve in outreach? और अब खुद के आराम को छोड़ के आउटरीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। I want to do something for God. मैं प्रभु के लिए कुछ करना चाहता हूँ। Men can reach out to men. Women can reach out to women. जो पुरुष है पुरुष के पास जा सकते हो जो At least sharing gospel to one person. एक इंसान को भी आप सुसमाचार You सुना can सकते stay there for hours and just, God, bring me somebody. I want to share at least one person. हो और घंटे तक वहाँ रह सकते हैं आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं एक इंसान आए Oh, I won't be able to come here, but I can take some flyer and go near my area. I can prepare somebody to come to Christ. मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ तो मैं कार्ड लेके जाऊँगा Maybe I won't be able to reach out to Bengali. Not these people are here. I can reach out to them. मैं बंगाली को नहीं दे सकता बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट लोग हैं उनको दे सकता हूँ There are not these people. There are people there. They do not know God. They are living in sin, addiction. Maybe I will reach out to them. बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट लोग हैं वो लोग पाप में जी रहे हैं और नशे में जी रहे हैं मैं उनको दे सकता हूँ Nobody is watching you. कोई भी आपको नहीं देगा God is watching you. पर परमेश्वर God आपको is so glad. My son, my daughter, they are prepared. They are preparing others. प्रभु बहुत खुश है कि मेरे जो बेटा और बेटी वो लोग तैयार है और God दूसरे will भी be able to तैयार है bless you. वो आपको आशीर्वाद Many of you may be saying, I myself did receive the healing. बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि मैं ही I myself in bondage, मैं ही एक बॉन्डेज in witchcraft, और एक जादू in depression. और डिप्रेशन में हूँ Then you should prepare to receive your healing. और आपको तैयार होना चाहिए ताकि Prepare in prayer. प्रार्थना में तैयार हो। Prepare in healing. और चंगाई के लिए Prepare in faith. विश्वास के साथ Before come to Christ. Before come to church. यीशु मसीह के पास और चर्च में आने से Before पहले even you dress up yourself. और खुद को तैयार करने से पहले Prepare. Go say, pray. और तैयार कीजिए मैं God, today I'm जाऊँगा going to your house. कि मैं तुम्हारी हो जाऊँ You should touch me, God. क्या आप मुझे छू You have to do something in my life, God. आपको कुछ करना है मेरे I want to be delivered, God. मुझे छुटकारा I पाना don't have any person but you, God. मेरे पास कोई भी नहीं सिर्फ आप ही I'm हो going there to meet you, God. मैं जाऊँगा और आपसे मिलूंगा You need to talk to me, God. और आपको बातें Don't wait for something to happen to your life. आप न रुके कि कुछ हो Oh, now गया। I'm good. If any sickness comes, अभी मैं अच्छा हूँ पर जब भी कुछ भी then I will be prepared. तब मैं तैयार If any person goes sick at my home, then I will be prepared. Then I will pray. Then I will have my faith. अगर कोई बीमार पड़ गया तभी मैं तैयारी करूँगा तभी God is calling out you to be like a deer. Always be watchful. Satan is roaring like a lion, the crocodile. Everything's coming to attack you. You be prepared. हिरण के जैसे आपको रहना है जब समय आता है आपको तैयार होना है And God said, disciples, be prepared. वो
disciples snoring, जो चेले sleeping. सो रहे थे। Jesus is saying, can't you just pray for 1 hour? यीशु मसीह ने कहा कि एक God is expecting you to pray for 1 hour at least a day. एक घंटा तो हमको समय 24 hours He has given you. 24 घंटे दिए Are you हैं taking 2 minutes to pray for your meal again them close? और 2 मिनट आप लेकर आप Pray for at least 1 hour. 1 घंटे के लिए आप प्रार्थना करें। Split your time and pray. आप अपना समय को Morning after hour, प्रार्थना evening करें। after hour. सुबह आधा घंटा शाम को Whenever I travel, I pray. जब भी मैं ट्रैवल करता I हूँ invite God in my life, in my situation. मैं स्वागत करता हूँ प्रभु को मेरे परिस्थिति God में। is going to help you. प्रभु आपको मदद करे। Let's all open our mouth and pray. हम मुंह खोलकर Oh, thank you, Jesus Christ, for your mercy, your grace. Thank you, Lord, you died on the cross for our sins. Thank you, Jesus Christ. You fasted for 40 days, 40 nights to overcome all the temptation of the Satan is going to bring. It says something, oh God, message to us. We need to be prepared in prayer, in fasting. God, we're going to do that, oh God, on Wednesdays. We're going to be fasting. We're going to be praying. We're going to be preparing for ourselves to receive the great blessing, even in our church, oh God. We're going to be prepared, oh God, to receive the great, oh God, miracle, oh God. We're going to see, oh God, multiplication. We're going to see people's going to come. We're going to see great revival. We're going to see, oh God, great blessing. Our people are going to be blessed. Our people are going to be receiving the healing and miracle. They're going to be, oh God, a great minister of God. We prepare ourselves to receive your greatness, oh God. Oh, Rabba Baba Shalana Mamando. Oh, Rabba Baba Shikara Baba Dio. Oh, Rida Baba Kuriara Bole Fitaka. Oh, Rabba Dio. Oh, Diara. We praise you. We thank you, Jesus. When it's all remain in prayer, हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे and God is telling me to convey this message to you. और प्रभु मुझे एक मैसेज दे रहा था कि मैं आपसे कहूँ This preparation time, ये जो तैयारी का समय है, waiting time, जो रुकने का समय है it is hard. बहुत ही God knows your pain. प्रभु जानते हैं आपके दर्द को At the same time, पर वही समय God है is saying victory is coming. और वो कह रहे हैं कि विजय आ रहा है Blessing is coming. और आशीर्वाद आ रहे हैं Healing is coming. चंगाई आ रहा है Miracle is coming. जो चमत्कार है वो आ रहे हैं God is going to bring the heaven to us. और वो स्वर्ग लेकर आएगा हमारे Let's लिए bless the Lord. हम प्रार्थना करेंगे Let's close our eyes and sing this song. Bless the Lord once. आंखें बंद करके Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Let's glory to God.
समय आंखें बंद करें। The Bible says, if you draw near to me, बाइबल कहती है कि आप मेरे नजदीक आओ। if you draw near to God, अगर आप प्रभु के पास जाएंगे, He will draw near to you. वो भी आपके पास आएंगे। You know, that's what you have to do in your life. वही आपको करना है In your prayer life, आपकी प्रार्थना की जीवन in your में। reading the Word of God, क्या आप प्रभु के वचन पढ़ रहे in हो? coming to church. क्या चर्च आ Now रहे you हो? are coming only once a week. क्या आप एक ही हफ्ते में एक बार Start ही आ coming रहे हो? Wednesday. आप बुधवार को Expect आए। something. God, I'm drawing near to you, God. आपको चाह लेकर I आओ want this deliverance, God. कि मैं आपके पास आ रहा And He हूँ will draw near to you. और वो आपके You पास take one step for God. आप एक कदम प्रभु के लिए God, उठाएं I'm going to share your word. कि प्रभु मैं आपकी जो I'm going to share the gospel. मैं सुसमाचार सुनाऊंगा Just start taking steps for God. और प्रभु के लिए आप कुछ कर Be देंगे prepared in your own life. आपके जीवन में आप तैयार Daily morning, pray. हर रोज सुबह आप प्रार्थना Read the word of God. प्रभु का वचन In पढ़ें the night, pray. Read the word of God. रात को भी आप प्रार्थना करें और Hear the प्रभु का voice वचन of the पढ़ें Lord. Shut the door. Read the word of God. जब भी आप अकेले हो आप वो दरवाजा बंद करें Shut the door. दरवाजा बंद Throw करें your phones away. अपना फोन को आप साइड रखें Be in the presence of God. और प्रभु की आप उपस्थिति में रहें Wait on God. और उनके ऊपर आप रुकिए God is going to do mighty thing in your life. और बहुत महान कार्य आपके जीवन में करें Mighty works in your life. बहुत ही महान कार्य Be prepared to receive that. और उसके लिए आप तैयार हो जाइए Let's pray and go from this place. हम प्रार्थना करके इस जगह We से have जाएं। evening service 7 p.m. हम शाम का प्रचार है We 7 encourage you to join us. मैं उत्साहित करता हूँ कि आप में हमसे जुड़े You know, let's pray. प्रार्थना करें Heavenly Father, we thank you, Jesus, for your wonderful presence, for your wonderful word that you have given us, O God, to be prepared. I pray for your people, help them, Jesus, to prepare themselves to receive great things from heaven above. I know that you have a great plan and purpose, a plan to prosper, a plan not to destroy, a plan to give hope and a future. Oh Father, for all your people, bless your people, O God. As we go from this place, go with us, bring us back safely when we gather here. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you. Fellowship with one another.